Hello friends, in this video we will talk about electromagnetic waves. Okay, we have heard this word electromagnetic waves lot of times, but what is the exact meaning of electromagnetic waves? पहले हम थोड़ा बहुत जानते हैं साउंड वेव्स के बारे में और वेव्स की डेफिनेशन के बारे में. So what is the definition of a wave? An organized disturbance that can propagate in space and time. An organized disturbance that can propagate in space or time is known as wave. But what about this word electromagnetic wave? See, as the name suggests, it is electro as well as magnetic. That means it is having some components of electric field and the components of magnetic field. So, if these electromagnetic fields can travel in space and time, they become electromagnetic wave. जनरली आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज. What is magnetic field? Magnetic field is something that is produced by an electric current or a moving charge. ठीक है, लेकिन जो fields हमने पढ़ी हैं, we have calculated various electric fields with the help of Gauss theorem. We have calculated various magnetic fields with the help of Biot-Savart's law or Ampere circuital law. But all those fields were static field. They were not changing. They were not changing. They were static. Their values were constant. But if the values of electric field and magnetic field keep on changing with space and time आप समझते हो, variables, variable क्या होता है? जिसकी value change हो या space के हिसाब से या time के हिसाब से. So if the value of electric field changes with respect to distance or with respect to space or with respect to time, the field becomes dynamic field. Okay, and such a dynamic electric field and dynamic magnetic field is known as electromagnetic wave. So first we find the definition of electromagnetic wave. What is the definition? The sinusoidal variations of electric field and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. इसको थोड़ा समझना जरूरी है. Sinusoidal variations यानी the variations will be in terms of sin theta or in terms of cos theta. Generally we write it in terms of sin theta. That means the variation of electric field will be like this. Electric field at any time will be given as E0 sin omega t, and if it is a magnetic field it will be given as B0 sin omega t. That means as the value of time changes, then the value of magnetic field will also change. This is meant by sinusoidal variations of electric and magnetic field perpendicular to each other. That means the directions of electric field and direction of magnetic field are perpendicular to each other and they are also perpendicular to the direction of propagation. मतलब क्या हुआ? मतलब all the three things are perpendicular to each other. In this coordinate system, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Okay, so if the electromagnetic wave is going in x direction and if the electric field goes in y direction, then the magnetic field will be in z direction. तो क्या होता है? तीनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं. Clear? Such an propagation or such a thing is known as electromagnetic wave. ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेप्चुअली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ आर दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड. हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड? साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस. Similarly, how are electromagnetic waves produced? Electromagnetic waves are produced by different methods. The first method is accelerating or retarding charge. अब कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है या चार्ज अगर रिटार्ड हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स. इलेक्ट्रोस्टैट्स का सबसे पहला स्टेटमेंट, इफ ए चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. इफ ए चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ द चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सचेंजेस द एनर्जी विद द एनवायरमेंट. अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एक्सचेंज करता है अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट हो रहा होता है. ओके, इन विच फॉर्म डज इट exchange the energy with the environment? It exchanges the energy with the environment in form of electromagnetic waves. Okay, अगर ये चार्ज रिटार्ड हो रहा है, if the charge is retarding, that means it is losing the kinetic energy. In which form this kinetic energy is getting converted? It is getting converted into the form of electromagnetic wave. Okay, second thing, oscillating charge. अगर कोई चार्ज ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, if a charge oscillates then again it produces electromagnetic waves.
okay, suddenly stop electrons. If electrons are given some very high energy and if they are bombarded on a very hard metal like tungsten, then what will happen? As they strike the tungsten, they will stop immediately, okay, and all their kinetic energy will be released, and that is what? That is X-ray. X-ray का प्रोडक्शन कैसे होता है? Electrons are highly accelerated, then they are bombarded on some heavy metal, and when they strike the heavy metal, they almost suddenly lose their energy, and this loss in energy also produces electromagnetic waves, which are called as X-rays. Okay, the last one is इलेक्ट्रॉन्स चेंजिंग ऑर्बिट्स एंड बैंड्स. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करता है या अपने बैंड को चेंज करता है, ठीक है ना, देन अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस. लुक एट दिस साइड ऑफ द बोर्ड. दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, दिस इज ऑर्बिट नंबर 1, दिस इज ऑर्बिट नंबर 2. ओके, ये SPDF जो भी आप बुलाते हैं इसको. ओके, सो इफ इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द सेकंड ऑर्बिट एंड इट जंप्स इनटू द फर्स्ट ऑर्बिट. If electron is there in the second orbit and it jumps into the first orbit, then what is happening? Electromagnetic waves are produced. Clear? The second thing is band. अब ये बैंड क्या होता है, ठीक है ना, ये तो एक इंडिविजुअल एटम की बात हुई. When electron is jumping from one orbit to other orbit, it is producing electromagnetic wave. But instead of one single atom, if you have bulk matter, that means if you are having thousands and lakhs and crores of atoms, then when electron, its energy will be divided into 3 different categories. ये एक ऊपर वाला बैंड जिसको हम अपर बैंड बोल देते हैं, अभी इसका नाम अपर बैंड बोल दो, इसका नाम लोअर बैंड बोल दो. और जिस तरह से 2 ऑर्बिट्स के बीच में खाली जगह होती है, दिस इज द खाली जगह बिटवीन द अपर बैंड एंड द लोअर बैंड. अगेन दिस इज फॉर इंडिविजुअल एटम, वन एटम, एंड दिस इज फॉर thousands and lakhs and crores of atoms grouped together. So again, in this, when an electron jumps from upper band to lower band, again what are produced? Electromagnetic waves are produced. Okay, so by these 4 methods electromagnetic waves can be produced. Now let us talk about the properties, some very important properties of electromagnetic waves. First property, it can travel in medium or it can even travel without any medium. क्लियर? कोई अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल. अगर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल? यस, दे ट्रेवल विदाउट मीडियम ऑल्सो. Okay, what is the speed of these electromagnetic wave? The second property, the speed of this electromagnetic wave किस किस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है. So if you see the product of mu 0 and epsilon 0, mu 0 magnetostatic constant, this is electrostatic constant. What I have done, divided by 4 pi, multiplied with 4 pi. Value of mu 0 by 4 pi, 10 to the power minus 7, and value of 4 pi epsilon 0, 1 into 9 into 10 to the power 9. Okay, when we write 1 upon 4 pi epsilon 0, its value is 9 10 to the power 9. Now this is 4 pi epsilon 0, so its value will be 1 over 9 into 10 to the power 9. Multiply this, 10 को नीचे लेके आओ, and this, and what do you get? 1 by c square, 3 into 10 to the power 8 का square मिलेगा, which is the square of speed of light. Okay, that means I can write this mu 0 into epsilon 0 is 1 by c square, or c is equals to 1 by root of mu 0 epsilon 0. This is a very important property. Okay, the speed of light in any medium is given by the constants of electric field and the constants of magnetic field. Speed of light दोनों पे डिपेंड करती है, करनी भी चाहिए, because what exactly is light? Light is nothing but electromagnetic wave. Okay, ये तो हुई speed in vacuum. Now what about the speed of electromagnetic wave in a medium? Very simple. C is equals to 1 by mu 0 epsilon 0. These are written for free space. You write these numbers for the medium. Mu m, permeability of medium. Epsilon m, permittivity of free space. Clear? This will be the speed of light in a medium. All right. Now, do these electromagnetic waves, do they carry energy? क्या इनमें एनर्जी होती है? क्या इनमें मोमेंटम होता है? आंसर इज यस. कैसे होता है, ठीक है ना, अभी मैं समझाऊंगा. पहले लास्ट चीज एक और देख लेते हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स. अभी मैंने बताया ऑल द 3 थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड व्हेन द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेव, द वेव बिकम ट्रांसवर्स वेव. इसका अपन एक आगे चल के प्रूफ भी करेंगे. नाउ एनर्जी
and momentum. Do electromagnetic waves carry energy and momentum? Yes, yes, yes. How do they carry this? देखो, एक hypothetical experiment यहाँ पे हुआ था. In that hypothetical experiment, there was this small windshield and it was enclosed inside a glass box, glass sphere. ठीक है, क्या किया, एक छोटा सा विंडशील्ड, क्या है, छोटी सी फिरकी है ये, ठीक है ना. इसको हमने किस में एनक्लोज किया है, इसको हमने एनक्लोज किया है एक ग्लास के अंदर, पूरा इसको सील पैक कर दिया, बाकी बाहर से कोई हवा इसके अंदर ना आए. ओके, नाउ यहां पे हमने एक रखा है बल्ब. ठीक है, द मोमेंट यू स्विच दिस बल्ब ऑन, जैसे ही हम इस बल्ब को ऑन करते हैं, द फिरकी स्टार्ट्स मूविंग, ये गोल 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 घूमना शुरू कर देती है. क्यों? बल्ब को ऑन करने से क्या कोई हवा इसके अंदर पहुंच गई? नहीं. व्हाट इज हैपनिंग? द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब, the moment you switch on the bulb, light energy is emitted. This light energy can pass through this glass slab and hit this firki, and this firki will start swirling, the firki will start moving. How does that happen? Because electromagnetic waves carry energy. ठीक है, इसको गोल गोल चलने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए? मोमेंटम का ट्रांसफर होना चाहिए. सो इज दैट टेकिंग प्लेस? यस, इट इज टेकिंग प्लेस. इट्स अ वेरी वेरी फेमस classical experiment done on electromagnetic waves. So I can also say that electromagnetic waves carry energy and momentum.